Good evening, all IP-MAT aspirants. Let's learn the A to Z of English with ABC, अभ्यांश चौहान एंड बच्चा पार्टी NPAT का जो आपने मॉक टेस्ट दिया था अभी कुछ दिन पहले, सो उसका रीजनिंग एबिलिटी का आई थिंक सेशन हो चुका है, क्वांट का सेशन हो चुका है, बट नाउ इट्स टाइम कि इंग्लिश के क्वेश्चंस एग्जाम सिनेरियो में इफ आई वर द स्टूडेंट, मैं वहां पर होता, किस तरीके से उन क्वेश्चंस को फेस करता, इन सारी बातों पे we'll have our attention in the coming two sessions. So in the first session, we have from question number 1 to question number 20. And the session that follows tomorrow, it will have solutions, it will have explanations from question number 21 to question number 40. So I hope you guys are ready. Without any further delay, let's move ahead to the first RC that we had. Now, so among the three RCs that we had, I would say थर्ड आरसी का लैंग्वेज थोड़ा सा आप वहां पर बोल सकते थे कि सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बट फर्स्ट आरसी सेकंड आरसी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफी इजी थे. सो हाय राजा, हाय धाकड़ व्लॉग्स, हाय हेलो एवरीवन. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रीड द आरसी. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं कि आरसी तो आपको देखना ही देखना है, साथ के साथ साथ क्वेश्चंस पर एक नजर जरूर रखनी है कि क्वेश्चंस किस टाइप के हैं. डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, सो वो इंफॉर्मेशन मुझे पैसेज में कहां पर मिल रही है, इन सारी बातों पर हमें फोकस करना है. हाय श्याम, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. सो अगर मैं इसको रीड करूं, एक जनरल पहले देख लेते हैं कि भाई इट हैज आई थिंक 4 to 5 पैराग्राफ्स. 4 to 5 छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे काम की है. So, in the first paragraph, they have said that the much anticipated 5G networks are expected to roll out across the world by 2020. So, भाई यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि कब तक वो एक्सपेक्टेड था, ठीक है. And are expected to offer faster speeds and more reliable connections, thus powering Internet of Things devices. Some estimates peg 5G data rates to reach a peak of 20 gigabytes per second. First paragraph was all about the introduction कि 5G will get introduced. Obvious सी बात है कि कोई भी next generation internet, कोई भी next generation अगर आ रहा है, so internet speed उससे बढ़ना ही बढ़ना है. Internet speed बढ़ना है, so that will help us in multiple ways. यही सारी चीजें आगे unfold होती हुई दिखेंगी. Now, however, क्या problem है इसमें, ठीक है, इस पर जरा बात करते हैं. So, however, telecom operators or telcos in countries like US, Japan, South Korea, and China are largely driving 5G rollout. Spectrum sharing will be of key elements helping them make shift. Spectrum sharing क्या होता है? यहाँ से आपको एक added information मिल गई कि भी ठीक है, 5G के बारे में हमने introduce कर दिया कि 5G is coming, but उससे फिर spectrum sharing क्या एक continuation में चीज इन्होंने बताई है, उस पर जरा बात करते हैं. So spectrum sharing is a technology that allows superimposition of 5G carrier waves atop of long-term evolution LTE or 4G. So what is spectrum sharing? कि 5G का superimposition over existing कौन सा था? 4G. या जिसे long-term evolution, that is LTE. This is important for a country like India that is currently riding the 4G wave and is expected to adopt 5G in the coming or in the next 2-3 years. Now, how can spectrum sharing be so helpful? इस बारे में भी आगे information है. So when we read the third paragraph, they say कि भाई spectrum sharing can dynamically allocate the right bands to user based on their requirements. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो सकता है कि how will spectrum sharing help us? 5G आ रहे तो हम सिर्फ 5G ही क्यों नहीं यूज कर रहे, शेयरिंग और इन चीजों की बातें क्यों आ रही हैं? So that could be one of the questions. Now, David Hammerwall from Ericsson company said, for instance, if a 4G and 5G user connects to a network simultaneously, each will be allocated the right spectrum. कि वो क्या पर्पस है उसका, डेटा यूजेज उसका पर्पस है, उसका पर्पस कॉलिंग है. Based on that, this spectrum sharing will be very helpful. That is what they're trying to say. Hammerwall said Ericsson's technology works on all LTE, that is not LI, this is LTE bands, because the firm thinks those are the most relevant. Why is he saying that? Because 5G abhi kitna successful hoga, nahi hoga, that is still a matter of discussion in the coming 2-3 years.
बट जो अभी एग्जिस्टिंग है, हाउ इज दैट सो बेनिफिशियल? दैट इज व्हाट हैमरवॉल इज सेइंग। नाउ फिर आगे बढ़ते हैं, फिर किस बारे में इन्होंने बात करी है कि इन थ्योरी स्पेक्ट्रम शेयरिंग अलाउज कंपनीज एन ईजियर वे टू शिफ्ट फ्रॉम देयर करंट 4G to 5G network. In the move to 5G, cash-strapped India telcos will have to deal with the fact that they already have vast legacy networks deployed, which is a challenge. Now, which are these legacy networks? इन पर भी बात करना बहुत जरूरी है. Now, in the fifth paragraph, what they're trying to say is कि a homogeneous network is an idea, but a legacy operator has to add new technology on top of existing technology. Legacy से आप ये समझ सकते हो कि जो भाई legacy किस चीज की होती है, something of the past. तो अभी बात 4G की हो रही है, so यहाँ से आप एक इंटरप्रिटेशन लगा सकते थे कि लेगेसी नेटवर्क्स आपके 2G और 3G होने वाले हैं आगे चल के. आगे रीड करेंगे एंड यूल सी कि भाई उन्हीं का डिस्कशन होने वाला है. Said so who said these things? It was from TV Ramachandran, who is president of Broadband India Forum. However, Ramachandran also pointed out that the challenges will present themselves. If 4G network is 5G ready, then spectrum sharing can really help. He says rather, but for legacy networks, now these are the legacy networks, 2G and 3G, there will still be a challenge. According to Hammerwell, in the future, LTE will bear the brunt. It will bear the brunt. So here's an idiom जो इन्होंने use किया है, और फिर यहाँ से related एक question भी आपसे आगे पूछा है. Bear the brunt of user traffic, while 2G remains for legacy voice traffic. He believes that 4G will die. So 2G, 3G, 4G, 5G सबके उन्होंने in the coming years क्या क्या usage होने वाले, कौन कौन से ऐसे networks हैं जो obsolete हो जाएंगे, ये सारा डिस्कशन हुआ. सो आई होप पैसेज रीडिंग में ऐसा कुछ भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज नहीं था कि आप वर्ड्स में उलझ जाओ, या इतना लेंदी पैसेज नहीं था कि फिफ्थ पैराग्राफ तक आते आते यू हैव नो आइडिया कि भाई फर्स्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ा था. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द पैसेज. नाउ आई वांट यू ऑल टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. बड़ा ही इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, इन्होंने सबसे पहले ही था कि the passage mentioned legacy networks. What are these legacy networks? कौन से legacy networks थे students? So it is mentioned here that legacy networks 2G and 3G there will still be a challenge. So 2G and 3G, they are the old 2G and 3G networks. Legacy is something which is associated with the past. Simple. कोई डाउट्स है स्टूडेंट्स तो बता दो. स्पीड में कोई प्रॉब्लम है तो बता दो कि सर थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, या थोड़ा सर आराम से, जो भी आपको लग रहा है. इफ यू गाइस हैव एनी डाउट्स चैट सेक्शन में मुझे बता दीजिए. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट लेगेसी नेटवर्क्स. यस सार्थक इज द करेक्ट आंसर बच्चे, बहुत बढ़िया. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्पेक्ट्रम शेयरिंग? पहले डिस्कशन किया, इंट्रोड्यूस किया कि भाई 5G नेटवर्क से क्या क्या होने वाला है, 5G नेटवर्क कब तक एग्जिस्टेंस में आएगा. देन इन द सेकंड पैराग्राफ दे डिस्कस्ड अबाउट स्पेक्ट्रम शेयरिंग. सो which of the following is an advantage of spectrum sharing? चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स आंसर दिस. advantages of spectrum sharing. So they said कि भाई जहां पर जो जरूरत होगी उसके हिसाब से 4G यूजर को दे देंगे या 5G दे देंगे. दैट इज व्हाट दे वर सेइंग कि स्पेक्ट्रम शेयरिंग से ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है. सो इफ आई कम बैक टू दिस क्वेश्चन, it can allocate the right bands to users based on their needs. It was mentioned. पैसेज में कहां पर है, पैसेज में भी भाई एक बार आपको दिखा देता हूं. सो यहीं पर आई थिंक देयर वाज मेंशन कि spectrum sharing can dynamically allocate the right bands to user on their requirements. Yes, Sarthak C is the correct answer. बहुत बढ़िया. Let's move to the third question. Consider the following idiom or phrase. Bear the brunt. Bear the brunt. When you bear something, it means you have to face the consequences, और consequences भी कैसे? Adverse consequences. ठीक है, तो ये एक bear the brunt, directly
ईडियम का मीनिंग भी अगर मुझे पता है तो कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या यूज था, उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Bear the brunt. Bear the brunt means to suffer the worst part of an unpleasant, problematic situation. So for question number 3, the correct answer will be option B. ठीक है? किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है भाई तो बता दो मुझे चैट में। ठीक है? और अगर डाउट्स नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। Anyone, any doubts? नहीं? Yes, Sarthak, B is the correct answer. Next question. According to the passage, what exactly is spectrum sharing? What exactly is spectrum sharing? Again, one of the easier questions पूरे NPAT में, NPAT का जो अभी टेस्ट हुआ था उसमें फर्स्ट पैराग्राफ, रादर फर्स्ट आरसी, सेकंड आरसी, ये दोनों बहुत इजी थे। थर्ड भी आई वुड नॉट से दैट इट वाज डिफिकल्ट। हाँ, लैंग्वेज, साइकोलॉजी और इन चीजों से रिलेटेड था तो शायद आप उसमें फंस सकते थे, otherwise ऐसा कुछ भी नहीं था in the entire paper that would have troubled you. In today's session we'll be discussing question number 1 to question number 20 और कल जो सेशन आएगा सेम टाइम उसमें the remaining questions. This is how this series will go on. So according to the passage, spectrum sharing is superimposition of 5G waves, 5G carrier waves atop existing LTE waves. इसको long term evolution और LTE directly mentioned था passage में. So again, one of the easier ones. Next question, student. Which of the following reflects David Hammerwall's view on future networks? What do you think? What do you guys think? Chalo, I want everyone to answer this question. And if you guys are enjoying the session, don't forget to like it. So, Sarthak is answered. I think 1 and 2, ये दोनों correct है. What did he say? 3G 3G तो वो कह रहा है कि भाई 3G तो ऑब्सोलीट हो जाएगा, 3G का तो कोई यूज बचेगा ही नहीं. So 4G networks will be mostly used for user traffic and 2G will be used for legacy voice traffic. That is what the correct answer for question number 5 is, which is option D. Which is option D. No, Sarthak, D is the correct answer. Let's move to the next. Which of the following can be a conclusion? Can be a conclusion of the passage. Which of the following can be a conclusion for the passage? Anyone? So I think ये बातें लिखी हुई थी कि legacy networks would also be used through spectrum sharing. नहीं, क्योंकि they are saying कि 3G will not be in use. So yes, 5G would bring better, bring faster speed and better connectivity, and it can help, it can aid operators in switching from 4G to 5G. So I think 1 and 2 are correct. Both the options 1 and 2 are correct. ठीक है? Yes, D is the correct answer, Sarthak. Very good. So I hope students पहला passage सभी का अच्छा हुआ होगा, कोई problem नहीं हुई होगी. ठीक है? Let's move to the next passage that we have. It's a place, it's a cafe, it's a setting around a museum. Museum में museum है. एक जनरल अगर मैं बोलूं कि म्यूजियम के ऊपर कोई पैसेज है
तो आपको क्या लगना चाहिए कि भाई म्यूजियम में दो ही चीजें होती है, आर्ट होता है और जो विजिटर्स होते हैं उनके अराउंड ही पूरी कहानी रिफ्लेक्ट होने वाली है। ठीक है, तो एक बार नजर मार लो। I'll give you a minute's time and then I'll read the entire paragraph, the entire passage. Then we'll come to the questions. तो ये भी बहुत बड़ा, आई वुड से बहुत बड़ा पैसेज नहीं था, और ऐसा ऐसा पैसेज नहीं था जहां पे मेरे स्टूडेंट्स फंसे। ठीक है, सो एग्जाम में भी अगर इस तरीके के पैसेज होते हैं, आई एक्सपेक्ट कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इट्स अबाउट अ म्यूजियम, एंड म्यूजियम का सेटिंग, म्यूजियम का बैकड्रॉप कहाँ पर है, एक जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट, एक जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट, दैट इज व्हाट इज गिवन इन द फर्स्ट पैसेज। किस तरीके से ड्यूरिंग द लास्ट कपल ऑफ वीक्स आई हैव ऑफन फाउंड माई सेल्फ at a cafe of the Museum of Goa near Saligaon, staring at the adjacent forest, reading, drinking coffee, and admiring the installation of my friend and artist Subodh Kerkar. The museum receives a steady flow of visitors all day, masked, socially distant, and decidedly heterogeneous. So they are masked, they are socially distanced. तो आप इससे एक रिलेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो ना कि ये कोविड टाइम्स की सेटिंग होगी, कोविड टाइम्स की बात हो रही होगी यहाँ पे। ठीक है, some look bemusedly at the art, others try to read the text that accompanies each work, and almost everyone takes photographs. So एक म्यूजियम में क्या सेटिंग हो सकती है? फर्स्ट पैराग्राफ वाज मोर अबाउट इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पैराग्राफ से क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं कि व्हाट डू द विजिटर्स डू व्हेन दे विजिट अ म्यूजियम? तो भाई ये इसके आंसर्स दे दिए है ना, कि दे सम लुक एट इट, सम ट्राई टू रीड द टेक्स्ट, सम ट्राई टू टेक फोटोग्राफ्स। सो जब आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हो, you should know what are the major takeaways from that part. Simple. अब अगर मैं second paragraph read करूं, there are a variety of ways. Of seeing and responding to art. Each visitor brings her unique perspective. This is what makes a museum a vibrant space. Its objective realized by the collaborative participation of the visitor. At the Museum of Goa, I found visitors not only photographing the art, but also taking their photographs with the art, that is selfies, group photos, inventive family portraits. I watched them for long, like it was a performance, and thought about their need to photograph themselves with the art. So ये एक जनरल चीज भाई, इसी के कॉन्टिन्यूएशन में क्या जनरल चीज कि आप देखते हो आर्ट के साथ भी लोग अपने अपने तरीका होता है पिक्चर्स लेने का। सम टेक सेल्फीज, some take group photos, and the author is sitting there and wondering कि यार ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, इनका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। So that is something which unfolds in the third paragraph. I was reminded of the concluding lines from the poem of Margaret Atwood. This is a photograph of me, where she says, but if you look long enough, eventually you will be able to see me. So it means ये जो lines है ना, these lines can be perceived in many different ways. और वही वहां पे जो विजिटर्स कर रहे थे कि भाई कुछ सेल्फी ले रहे थे, कुछ टेक्स्ट रीड कर रहे थे, उन सारी बातों के लिए लिखा हुआ है। Perhaps people photograph to see and understand themselves better. अब ये लाइन बोल्ड में है, सो पक्की बात है कि यहां से एक क्वेश्चन होने ही वाला है। ये सब तो क्लूज हमें यहाँ पे मिल ही रहे। The photo offers access to an inner life. It is an enabler, so to speak. Many, it constitutes a personal archive for the individual who is both the photographer and the archivist of her story and memory. Or the photograph could be a mnemonic device. But then the question is, in the type of photographs taken at the museum, who or what is more important? Is it the individual? Is it the artwork? Is it the artwork? In the hours I have spent observing the visitors, I have often found them treat the art as a filler or a prop to enhance the visual aesthetics of their photos. The art is like an ambient music. The focus of the photo remains to the individual. Such is the inventiveness of the individual's myriad poses that even the creator of the artwork could not have imagined that her work could be seen or captured from so many angles. Throughout this paragraph, what he's trying to say is
कि लोग पिक्चर्स ले रहे हैं और उनके अलग अलग रीजंस हैं टू टेक पिक्चर्स। पिक्चर्स में भी किसी में उनका अपीयरेंस ज्यादा है, आर्ट का कम है, कहीं पर आर्ट ज्यादा है और उनका अपीयरेंस कम है। एंड नाउ फ्रॉम एन आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव ही इज ऑल्सो थिंकिंग कि यार ये तो बनाते टाइम भी मैंने इतना नहीं सोचा था कि लोग इतने डिफरेंट तरीके से मेरे पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे, इतने ड्रामेटिक तरीके से रहता। ठीक है, फिर व्हाट दे हैव कंक्लूडेड, all art objects as a museum await the participation of visitors. Yes. Photographing oneself with a work may be a form of engagement or the beginning of such a process. One looks closely and tries to understand the work. Some try to smell it. I was told at the museum. Some try to imitate it कि भाई कोई पिक्चर दिख रहा है, अब उसमें कोई इस तरीके से with folded hands खड़ा है. So the person जो फोटो जो विजिटर है वो भी भाई ऐसे ही खड़ा हो जाएगा. That is what imitation is all about. And though discouraged to touch the art, some invariably want to feel its texture. मना किया जाता है, वहां पर लिखा होता है कि do not touch, but yet some people do that. Perhaps the photograph of a visitor with an artwork could be imagined as the result of a collaboration between the visitor and the work. Maybe the photograph in itself is new work of art. बिल्कुल, art के साथ आपने photograph click किया, that could also be a new art by itself. ठीक है, पैसेज में ऐसा कुछ भी नहीं था जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में था या बहुत ज्यादा इंट्रिकेटेड था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। सो here are your questions, students. Which of the following statements can be inferred about the visitors of the museum? चलो, here's your question. चलो बच्चा पार्टी, let's see what can be inferred. So they take photos of art to boast later. Boasting इस तरह का कहीं पर there was no such mention in the passage. Simple. So this is not correct. They are never of the same kind. ये आप शायद infer कर सकते हो. But if I go back to the passage, now what they say, the museum receives a steady flow of visitors all day, mass socially and decidedly heterogeneous. Now they are saying कि ठीक है अलग अलग हो सकते हैं, but if I were the student, so मैं ये never देख के ना, never देख के मैं इस ऑप्शन को इग्नोर कर देता। क्यों इग्नोर कर देता? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बार या in all the cases it will be of different types. ये never जो यहाँ पे adverb use हुआ है, that is what is forcing me to eliminate this option. Now if I read the third one, there is always someone willing to overlook the rules. Yes, ये बात लास्ट में लिखी हुई थी ना कि although वहां पर लिखा होता है कि you are not supposed to touch the art, but still some people want to have the feel of that texture that was mentioned in the last part of that RC. So I think only 3 is correct. That is what I believe. Only 3 is correct. ठीक है, पैसेज में अगर सेकंड ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है तो पैसेज में लिखा था कि दे आर जनरली, व्हेन दे से जनरली इट मींस नॉट 100%. ठीक है, दे आर लीविंग दैट मार्जिन. So B was the correct answer for that question number 7. Here's the next one. Next question, Sarthak, waiting for the answers. बताइए. So the next question goes like this. What is the author's viewpoint with respect to the second paragraph? कुछ नहीं करना है, second paragraph को देख लेना है. Simple as that. There are a variety of ways of seeing and responding to the art. They bring their unique perspective. This is what makes museum a vibrant space. ठीक है, और बातें क्या लिखी हुई हैं कि I found visitors not only photographing the art but also taking their photograph with the art as well. ठीक है, I watched them long. It was a performance thought about the need. ठीक है.
Second paragraph. So museums are incomplete without visitors. Are they? Of course they are. Photography is the best medium of interaction. Yes. So what visitors interacting with the art is an art itself. So I think all three are correct. All three are correct in this case. Okay. Let's move to the next question, students. What does the author indicate when they quote that perhaps people photograph to see and understand themselves better? So people photographs allowed to view themselves from an outsider's viewpoint. जब भी आप कोई photograph देख रहे होते हो या in general भी मैं बात करूं और passage के context में भी बात करूं, so उसमें लिखा होता है कि it allows them to view themselves from an outsider's point of view. जब आप photograph को देखते हो, you and that art, ठीक है? So that was question number 9 and the correct answer was option A. Now, given below is a possible inference that can be drawn from the facts stated in the last paragraph. You have to examine the inference in the context of the passage and decide upon its degree of true or false. Art is incomplete without anyone to engage with it. What do you think, students? What do you think about question number 10? I think it is probably false. Yes, कोई art है, art needs an audience, art needs an interaction, but अगर interaction नहीं भी है, then itself art अपने आप में complete होता है. So, उतना margin बच रहा है कि I could say कि ये probably false है, क्योंकि exact पूरी पूरी information तो passage में नहीं लिखी हुई थी. ठीक है? So that is the reason I think option D is correct. 11th question. Such is the inventiveness of the individual's myriad poses that even the creator of the artwork could not have imagined that her work could be seen or captured from so many angles. Now, which of the following creates or rather presents a contrast to this thing? Contrast to this. मतलब इसका opposite कौन सा हो सकता है? इसका opposite कौन सा हो सकता है? That is what they're asking. So बता दीजिए भी. Why it can't be probably true? सी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी गिवन थी जो बिल्कुल करेक्ट लग रही थी बट लीविंग उतना सा मतलब क्या बोलूं कि लास्ट का कंक्लूड ही नहीं हो पा रहा था बस तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रोबेबली फॉल्स प्रोबेबली ट्रू मैं तब कहता जब सारी इंफॉर्मेशन फॉल्स होती और एक मुझे पॉइंट मिल जाता टू एक्सप्रेस की नहीं ये मैं फॉल्स पूरा पूरा फॉल्स नहीं बोल पा रहा हूँ श्योरिटी से in that is where you will use probably true. I think Sarthak, that is how it goes. So based on the inventiveness, so which of the following presents a contrast? Contrast तो भाई यही है कि individuals creativity often derails them from truly enjoying art. नहीं, derail नहीं कर रहे हैं, rather they are adding more meaning to that art. Derail नहीं कर रहे हैं, ठीक है? So that was question number 11, जिसका rather they have myriad ways is ना they have so rather they have myriad ways कि वो कैसे आर्ट में और एडअप करें और उसे कैसे इन्वेंटिव बनाएं. Let's now move to the third passage, students. Third passage.
So economists have spent, ये एक out of rather among all the three passages जो आपके NPAT एग्जाम में थे, सैम्पल पेपर में, ये वाला था जिसका लैंग्वेज यू कुड से कि थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी फर्स्ट और सेकंड का लैंग्वेज इतना डिफिकल्ट नहीं था. So economists have spent most of the 20th century ignoring psychology. ठीक है. That is, can be positive or otherwise. But today there is a great deal of emphasis on how happiness can shape global economies or on a smaller scale successful business practice. This is driven in part by a trend in measuring positive emotions, mostly so they can be optimized. Neuroscientists, for example, claim to be able to locate specific emotions such as happiness or disappointment in particular areas of the brain. Wearable technologies such as Aspire offer data-driven advice on how to reduce stress. ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन है कि आने वाली जो डिवाइसेस हैं या टेक्नोलॉजी है, हाउ इज इट हेल्पिंग न्यूरो साइंटिस्ट एज वेल, कि वो किस भाई हमारे इमोशंस को भी ट्रैक कर पाए कि हैप्पी है सो देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पल्स इन योर ब्रेन, सैड है, स्ट्रेसफुल है. सो दैट इज व्हाट द एंटायर पैसेज इज ऑल अबाउट. We are no longer just dealing with happiness in a philosophical or romantic sense. It has become something that can be monitored and measured. ठीक है, हम कहते थे ना कि यार एब्स्ट्रैक्ट नाउन की आपसे कोई डेफिनेशन पूछता था तो आप कहते थे हैप्पीनेस, कि भाई उसे हम देख नहीं सकते, इट्स नॉट टैंजिबल. बट इन टुडेज वर्ल्ड इट इज मेजरेबल, इट कैन बी मॉनिटर्ड. ये बात लिखी हुई है. Including by our behavior, use of social media, and bodily indicators such as pulse rate, facial expressions. There is nothing automatically sinister. Sinister is, that is, there is nothing which is bad about this trend, but it is disquieting. It is annoying that the businesses and experts, driving the quantification of happiness claim to have our best interest at heart, often concealing their own agendas in the process. सीधी सी बात है, इमोशंस को ट्रेस कर रहे हैं, बिहेवियर को ट्रेस कर रहे हैं. अब इसके इनके कंसील्ड एजेंडास क्या है, वो हिडन एजेंडास क्या है इनके, कि भाई अब वो फिर कंज्यूमर बिहेवियर के थ्रू बिजनेस अपना कैसे बढ़ाना है, प्रोडक्ट्स कैसे बेचने, उन चीजों पर दे कैन यूज इट इन दैट वे. In the workplace, happy workers are viewed as a win-win. Work becomes more pleasant and employees more productive. But this is now being pursued through the use of performance evaluating wearable technology such as Humanize or Virgin Plus, both of which monitor physical signs of stress and activity towards the goal of increasing productivity. Now, आगे फिर और क्या क्या उसके यूजेज हैं, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं, कौन कौन सी ऐसी सिटीज हैं जो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट हो भी गई हैं, इन चीजों को अडाप्ट भी कर चुकी हैं. सो they have this discussion about Dubai. So cities such as Dubai, which has pledged to become the happiest city in the world, dream up even more elaborate and intrusive ways of collecting data on well-being, to the point where there is now talk of using CCTV cameras to monitor facial expressions in public spaces. New ways of detecting emotions are hitting the market at the time. One company, Beyond Verbal, aims to calculate moods. Acha. So which company is doing that? Its name is Beyond Verbal. What it is doing? It is aiming to calculate moods conveyed in a phone conversation, potentially without the knowledge of at least one of the participants. And Facebook has demonstrated that it could influence our emotions through tweaking our news feed, opening the door to ever more targeted manipulation in advertising and influence. ठीक है, ये सारी बातें कि different companies how they are using our emotions और उनको फिर किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर था. फिर as science grows more sophisticated and technologies become more intimate with our thoughts and bodies, a clear trend is emerging. What is that trend? Where happiness indicators were once used as a basis to reform society, challenging the obsession with money that GDP measurement entrenches. They are increasingly used as a basis to transform our disciplined individuals. अब लास्ट में how are they concluding this passage, इस पर जरा थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं.
So happiness becomes a personal project that each of us must now work on, like going to the gym. Since the 70s, depression has become to be viewed as a cognitive or neurological defect in the individual and never a consequences of circumstances. So before 1970s, it was believed कि depression कोई action हुआ उसकी वजह से we get depressed या किसी के circumstances खराब हो गए उस वजह से वो डिप्रेशन में चला गया बट आफ्टर 1970 साइंटिस्ट ने बताया कि नहीं इट इज ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल और कॉग्निटिव डिफेक्ट all of this simply escalates. It increases the sense of responsibility each of us feels for our own feelings, and with it, the sense of failure when things go badly. A society that deliberately removed certain sources of misery, such as precarious is something which is dangerous, and exploitative employment may well be a happier one. But we don't get there by making this single, often fleeting emotion the overarching goal. ठीक है पूरे पैसेज में इट वाज ऑल अबाउट कि हमारे इमोशंस को किस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं इमोशंस को कैसे यूज कर सकते हैं उस डेटा को कंज्यूमर बिहेवियर के लिए या आगे बिजनेसेस उसे कैसे यूज कर सकते हैं दैट इज व्हाट द एंटायर पैसेज वाज ऑल अबाउट ऑल अमंग ऑल द थ्री पैसेजेस जो इस एनपैट सैंपल पेपर में थे आई वुड से इसमें आप फंस सकते थे इसका लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था सो अब लेट्स come to the questions. According to the passage, what has wearable technology contributed to? So wearable technology भाई ये productivity की बात तो हुई ही है passage में बार बार है ना It can help corporations to maximize productivity and productivity कैसे stress को reduce करके stress को reduce करेंगे तभी productivity बढ़ेगा So it can offer data-driven solutions to reduce stress and it can help corporations to maximize employee productivity. So both A and B are correct. Both A and B are correct. Both A and B are correct for question number 12. Another word for intrusive, again intrusive होना, presumptuous होना, ये बड़े common से word हैं. ये बड़े common से word हैं. आप लोगों को classes में, sessions में ये word I guess मैं 3 से 4 बार करा चुका हूँ. So this is something which I expect कि आपसे गलत नहीं हुआ होगा. That is what this vocabulary based question was. Now, according to the passage, which of the following is true? ठीक है. Which of the following is true? So a person has started feeling more responsible for their feelings. Yes, ये passage के last concluding lines में mentioned है. It is mentioned in the concluding lines of the passage. Wearable technology is contributing towards reversing the role of previously played by happiness indicators. Yes, wearable technology से ही हम इन चीजों को काफी अच्छे से समझ पा रहे हैं. Emotion mapping technology can be used to manipulate opinions. जो Facebook का एक एग्जाम्पल दिया हुआ था वहीं से I can conclude कि हाँ this is true according to the passage. So all A, B, C are correct. All the options A, B, C are correct. All the options A, B, C are correct. Next question, tone of the passage. Tone of the passage. टेक्नोलॉजी बार बार टेक्नोलॉजी का ही यूज किया है ठीक है जुबिलियंट इज समथिंग इट इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस एंग्री आपको पता ही है लॉडेटरी इज समथिंग व्हिच इज प्रेज वर्दी अपलॉड वर्दी पैसेज में टेक्नोलॉजी की बात ज्यादा हो रही थी कि इस कंपनी ने ये टेक्नोलॉजी यूज करी है इसके हेल्प से आपके हैप्पीनेस इंडिकेटर आपके इमोशंस को वो कैसे पकड़ रहे हैं ठीक है सो दैट वाज ऑल अबाउट द टोन ऑफ द पैसेज And the last question from the passage. The author has talked about everything in the passage except which of the following? So yes, biological aspect का discussion था. Environmental dilemmas की कोई बात नहीं थी. The environmental dilemmas regarding wearable technology, this is something which is not mentioned in the passage. Increasing productivity, ये भी passage में था. ये भी passage में था. So among the given options, option B is correct. That was all about the three passages that were asked in the NPAT sample paper.
Now we have four questions. We have four questions from para completion. So I hope कि आपने ये question सही किए होंगे. I'll give you a minute or so to have a look at this one and try and figure out कि कौन-कौन से options हैं जो eliminate कर सकते हैं. Which of the following could be probably मैं वहां पे use कर सकता था. ठीक है? So देख लो एक बार question number 17, 18, 19 and 20. All these are based on para completion. चलो अब पैसेज को रीड करते हैं स्टूडेंट समझते हैं क्या बात लिखी हुई है व्हाट कैन बी probably which of the following can be used to complete this paragraph इस पर जरा नजर मारते हैं. So India's status as a towering big brother has always complicated relations with smaller neighbors such as Nepal, Sri Lanka and Bangladesh. This natural asymmetry has been compounded by India's rapid economic growth and visible rise in national determination, at least since 2014. So बात हो रही है कि how इंडिया का स्टेटस जो बढ़ता जा रहा है, how it is affecting the relationship with neighboring countries जो इंडिया के साथ है. This increased elbow room मतलब a proper distance between two people. Elbow room for India may have worked to the advantage of Sri Lanka. How? In securing a financial rescue package and counterbalancing China. But experience suggests that generosity towards a beleaguered neighbor wins only short-term gratitude. Now, शॉर्ट टर्म ग्रैटिट्यूड की बात होगी. अब या तो आगे कुछ अगेन शॉर्ट टर्म ग्रैटिट्यूड का एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे होना चाहिए पैरा कंप्लीशन में, और लॉन्ग टर्म ग्रैटिट्यूड क्या है, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप क्या है, उसका मेंशन होना चाहिए. So yes, option A is the one which is correct. Long term alliance are built on mutual interest and respect. वो ये बताना चाह रहे हैं कि ठीक है इंडिया श्रीलंका से दूर है, सो चाइना ने हेल्प कर दी, बट सिर्फ चाइना की तरफ से तो हेल्प हुई, श्रीलंका ने चाइना के लिए क्या किया. सो वो म्यूचुअल बेनिफिट नहीं है, म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं है. सो इसलिए ये अलायंस इनका लॉन्ग टर्म जाएगा नहीं जाएगा, वी कैन नॉट से दैट. Other options, as I said, it will not follow with something कि small nations prioritize their interest or gratitude, ऐसा कुछ भी नहीं है. Diplomatic relationships are unstable. They are inherently unstable. वाह क्या बात लिख दी, एक्सट्रीम बात लिख दी बिल्कुल कि ये डिप्लोमेटिक रिलेशन तो सर अनस्टेबल ही रहेंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता है. Neighboring countries are again inherently distrustful. हमेशा डिस्ट्रस्टफुल होते हैं क्या, ऐसा कहीं भी पैसेज में दूर दूर तक इसका कोई मेंशन नहीं था. ठीक है, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 17. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. So under the deal, they are talking about a particular deal. Hamas will release 50 of the around 240 hostages its militants took on October 7 in exchange for 150 Palestinian women and children in Israeli prisons. But there is provision to extend the truce. Now, what is truce? Truce एक agreement होता है कि भाई we'll stop fighting.
ठीक है, एग्रीमेंट टाइप का होता है, दैट इज व्हाट ट्रूस is a provision to extend the truce by another day for every additional 10 hostages released by Hamas. ठीक है, तो ये ट्रूस आगे बढ़ भी सकता है। यहाँ पे फिलर है, Israeli soldiers and tanks are still in Gaza and people are not being allowed to return to their homes in the north of the strip. Extending the deal will be even harder, as at least some of Israeli hostages are not with Hamas but with other Palestinian militant group outfits. तो बात हो रही है अभी किसके बारे में? सिर्फ ये एक डील है बिटवीन हमास एंड पैलेस्टीन, इतने तक ही हमें अपना स्कोप लिमिटेड रखना है। तो ऑप्शंस जो ऐसे ऑप्शंस होंगे जो वर्ल्ड पीस और जियो पॉलिटिक्स और इन सारी एशियन पॉलिटिक्स, एशिया में पीस कैसे रहेगा, इनसे रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होंगे। इस तरीके से मुझे ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं एंड दैट विल हेल्प मी गेट टू द करेक्ट वन, सिंपल। So the geopolitical landscape, again, as I said, it is not about geopolitical landscape. It is just about a particular truce between Israel and Hamas. Amidst the lingering tensions, the continued presence on Israeli soldiers and tanks poses a formidable challenge. ये ठीक है, पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में है, देखते हैं क्या ये करेक्ट आंसर हो सकता है। Negotiating the truce becomes more integrate. Integrate means more complex. As Israeli soldiers and tanks persist in their presence in Gaza, the complexity deepens as Israeli soldiers and tanks show no signs of withdrawal from Gaza. Complexity deep होगी नहीं होगी उससे मैं bothered नहीं हूं, lingering tension से मैं bothered नहीं हूं। The passage is just about कि ये truce अभी हुआ है और इस ट्रूस को एक दिन और आगे एक्सटेंड कर पाएंगे, 2 दिन और आगे एक्सटेंड कर पाएंगे, 3 दिन और आगे एक्सटेंड कर पाएंगे, इस पर मुझे फोकस करना था। दैट इज व्हाट द मिसिंग पार्ट वाज। सो यस, नेगोशिएटिंग द ट्रूस becomes complex as Israeli soldiers and tanks persist in their presence in Gaza. So for question number 18, the correct answer will be option C, which completes this paragraph. That brings us to the 19th question for today's session, students. 19th question. So escalating climate-induced migration. Now this passage, this particular paragraph is all about climate-induced migration. सिर्फ क्लाइमेट की वजह से, ठीक है ना, इस पर ध्यान रखना है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। Escalating climate-induced migration in Bangladesh, Nepal, and other parts of India presents not only a looming humanitarian crisis but also significant threat to regional stability. Despite recognizing, देखो किसी थ्रेट की बात हो रही है, ठीक है, सिग्निफिकेंट थ्रेट, looming humanitarian crisis. Despite recognizing the dangers associated with climate-induced migration and making initial attempts to tackle them, the region's readiness is hindered by the immense scale of threat posed by climate change and displacement. ठीक है, a disconcerting report by ActionAid International and Climate Action Network South Asia predicts that an alarming 63 million people in the region may be compelled to leave their homes by 2050. This is a direct result of rising sea levels, river engulfing settlements, and land becoming unusable due to drought. ठीक है, सिर्फ फोकस किस पर रखना है कि ये जो माइग्रेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन, इसको कंटिन्यूएशन में लेकर चलना है। नाउ ऑल द ऑप्शंस आर एंडिंग विथ
क्वेश्चन मार्क, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चाहिए। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिर्फ आई थिंक यही होना चाहिए कि हाउ कैन वी हैंडल दिस प्रॉब्लम, हाउ कैन वी मिटिगेट इट्स इम्पैक्ट, कि ठीक है पूरा पूरा माइग्रेशन तो हम नहीं रोक पाएंगे बट उसके इफेक्ट को कम कैसे कर देंगे, मिटिगेट कैसे कर देंगे, उस पर फोकस करते हैं। So what strategies can be implemented to escalate the cascading impacts of environmental degradation? वाह भाई, वो ये तो ऑपोजिट बात कह रहा है कि जो ये इम्पैक्ट्स हो रहे हैं इनको और कैसे बढ़ाया जा सके। बढ़ाने नहीं जाना है हमें, तो इसे कम करना है, प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। In the face of this ecological upheaval, the comprehensive measures can be devised to ensure the sustainable resettlements and livelihoods of the anticipated millions डिस्प्लेस हो जाए मिलियंस, उसके बाद रीसेटलमेंट की बात करना बनता था। बट दे आर सेइंग कि 2050 तक ऐसा होगा कि मिलियंस ऑफ पीपल विल गेट डिस्प्लेस्ड। सो अगेन ये गलत है। Given the intricate interplay of environmental factors, social dynamics, geopolitical considerations, इन वर्ड्स का कोई यूजेज स्टूडेंट्स यहां पर नहीं होना है। सिर्फ एक प्रॉब्लम डिस्कस करिए, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं मुझे ये देखना है। So yes, option D is correct. How can we effectively address the imminent and extensive humanitarian and stability challenges posed by growing climate-induced migration crisis in Bangladesh, Nepal, and different parts of India? ये पूरा पूरा पैसेज के साथ कोहेरेंट था एंड यही क्वेश्चन के साथ ये वाला पार्ट होता है खत्म। सिंपल। That was question number 19. That brings us to the last question of today's session. 20 questions हो गए हैं, 20 questions बच रहे हैं जो कल के सेशन में हम देखेंगे अगेन फ्रॉम सेम टाइम 4 in the evening. Next question, students. Next question देखते हैं. So one of the advantages of a collegium composed only of members of the higher judiciary is that the impartiality regarding the political affiliations of the appointees. A judge is ideally above politics when he or she sits in the court, upholding the law and the constitution in order to deliver justice is their only duty. अब इसी के साथ कुछ additional information वाला part मुझे ढूंढना है. So nevertheless concerns persist. ये थोड़ा नेगेटिव हो गया कि concerns अभी भी है, नहीं, इसके बारे में additional information देना है कि how is it beneficial. So yes, I think B is correct. This separation from political influence ensures that the judiciary remains an independent, unbiased pillars of the governance. However, recent debates again negative sense में जा रहे हैं. Despite this, they have faced criticism, again negative sense में जा रहे हैं. मुझे एक ऐसा सेंटेंस चाहिए था जो इस बात को आगे लेकर जाता, इस बात को सपोर्ट करता, कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करता, फिर ये वाले पॉइंट्स आते कि नहीं इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, या उससे रिलेटेड क्या क्या क्रिटिसिज्म थे, वो बात बाद में आती. ठीक है. So students, that was all for today's session. NPAT sample paper question number 1 to question number 20 आज हो गए हैं. Question number 21 to question number 40 कल same time 4 in the evening. Thank you so much.